Well, hello, good evening, ladies and gentlemen, and you guys are tuned in at the Algambo Esports, and this is the mobile warm-up flashback again. New week, new day. The teams are all here trying to get their victory. Now, again, there are a few teams who are having a good streak of victories onto their hands, but let's see if there are new teams today. It's going to be me, PT, your caster, and I'm joined by Asia today. Hello, Asia. How are you doing? Hello, PG. I am doing great, and I hope that everyone else is also doing the same. And with that, we will soon be moving on to the draft phase. But I would like to remind everyone to like, share, and subscribe. And we have our registrations going on. So if you are interested in practicing for the weekly scrims, you can join up. And PG, with that, would you like to introduce us to the teams which are going up against each other? Definitely. We have the first team who's going to be a little new. That's going to be Team Gentlemen's and Gravenoise being back again for the second consecutive week. Now, let's see how they will be trying to get a Different victory here. Because, perspectives again, expose the as same per the last truth. few weeks, I have been seeing them. They have been really good with their draft and their execution part as well. But today, Gentlemen's are here trying to get a good victory onto their hands as well. So let's see if that happens or not. The bans have started. We are looking at a Belleric as well as the Marcel Paquito. Understandable, you do not want these heroes opened up for yourself or even to your enemies. Well, it definitely very Welcome uh, to my just the castle, burst potential is my too much with the friend. Paquito, and of course the Marshal can disrupt a lot of Malachi formations, a lot of enters the arcs, scene. and even zone away when a retribution is required on the utilities. So you ban them away, but the Franco, I mean, Belric does make sense because he is kind of, I would say, since Mia has been climbing up to the meta, you can even Oh, see her getting used up in the immortal rank because of the Berserker Fury. But then there is the Franco ban, which is really strange. I mean, even Akai makes sense because even though his jungle was nerfed, I think as a tank he's still good. And with the damage increase, the poke is also there in the early game. So maybe Everything planning for engulfed in something like an assassin which flames. dives in. oh, that could be a really good thing if they are actually going for it. And it's kind of crazy to see how the Leo mod, which was having such a good pick rate has been suddenly not being picked up. So I do want to see what is it going to be. Maybe something like a Fredrin, or talking about the assassins, we may be able to get the Nolan, who has been recently buffed. But Grave Noise went in for a bit of a different Crowned by pick, which heaven's is mandate, still my making legacy sense given shall the fact that endure. Grave Noise might be wanting to go for the tankiness. So let's see if the tankiness do jump in or not. There's going to be a Zatian trying to get a 1v1 onto the middle lane, but at the same time, Minotaur joins in for the roam. Now, again, there is a Minotaur. So, what are the team is They call me planning a hero onto the opposite because I side? saved. For honor! Well, something with a lot of immunity which can dash away. And yes, Vysis makes perfect sense. I think he's a very strong jungler. Just give him some time. Even his jungling speed is pretty fast, I would say. Not the fastest junglers even yet after the nerf. And I think a Granger can work well since Granger can dash out. Even a carry can work. Let's see what they will pick. But third pick being Tigreal. I think they should have prioritized the something else. Something I'm really surprised though no one picked up the Zushan nor the God, even though God at least is kind of really broken this meta. But with this we have the Mincy coming up. Mincy, again a very good pick in the EXP, he's been rising up Light me lately. up and Oh watch my the God, definitely. world Mansatar, I burn! really like how the teams are actually going for it quite recently. Even in my rank games, I have been constantly seeing the Mansatar at least getting banned out Come or on, even Dexter. picked It's our right there. So showtime. let's see what is it going to be for the other side, because EXP for the Mansatar, it is just for him to clear the lanes and try to go towards the team fights. Now again, the flicker hook skill might be coming in, but gentlemen, block off the export, which is a good thing. But at the same time, are they actually planning to go for a tanky jungler? Hopefully, I think they might be. Sancho. It will even suit them. But then I think someone who can dive in for the Valir should also exist Valor because and royalty in a dead Valir body. just works in every team comp. Whatever you pick, whether there's a tank in front, a tanky jungle,
or even an assassin. He can just, just push everyone away. So pretty good option out there, and he will be constantly poking. And towards the late game, the ult duration is way too less. This range gets way too insane with the ult. So let's see if they're planning for something like that. Because even though the Mincy is good, right now Willie can purify out, and even the Vices can purify out. Let's see what will be the EXP pick though. One of the good counters for the Mincy can be the Guinevere or even the Sylvana. You just need to burst him down, because you really wouldn't want it doesn't even matter if you don't flicker hook. Just one good flicker ult onto the main priority can literally disable and take Let's down the go. problem of the team. So yeah, let's see though. Irithel coming up. Another great pick, True pretty love hard to catch, is like especially black towards the time late and game, tide and wait for no particularly man. with the Nor Carmilla girl. PG. Oh, Carla, that makes absolute good sense as well. So that could be a pick right there. But hey, Carmilla onto the jungle. That's been such a long time. I have not seen that. Okay, works in a certain situation. No, wait, that's not even a jungle. My bad. That's an EXP. Wait, what? They have taken an EXP just to counter a Tigreal, I mean not Tigreal, but the Mincita that is weirdly little odd, but at the same time, would love to see what team Gravenoise are planning. One thing about Carmilla, she is an absolute beast when the blood dust connects to each other, and the Tigreal can follow it up. So I do believe that's kind of a situation is something we are looking forward to. But gentlemen, they are in for a mid to late game, while Gravenoise does have a bit of an early onto their hand. So let's see how the early game works out onto their favor or not, because the Ammon does needs a bit of snowball as well. So is it is going to be great noise, or is it going to be gentlemen? So let's wait and watch. And with that, ladies and gentlemen, into the land of dawn, here we go. Well, yeah, and I'm very surprised. I don't know if Carmilla is going for a magic build or a hybrid build or a tanky build, because if she doesn't, Mitzi can literally shred. And Mitzi, towards the late game, if he's going with a Trinity build, he can literally even melt down, shred down tanks. So what is a Carmilla? So I think Team Grave Noise's entire draft heavily depends on team fight. So let's see, how they are rotating, how they're taking the objectives, because we can already see now, right, how that team will be performing. Because if they're playing together, that means they are pretty good with all the, I would say, team fights. And that's what Team Grave Noise needs for now. But Team Gentleman too, I think, trying to just invade. Nothing much though, just left right happening in the top lane though. The Erythra getting backed off. Zoned away really hard. Oh, ho, ho, ho. Again, Irithel does need a bit of a farm right there. Now, again, Beatrix being Beatrix, she would be trying to stop as much as possible. Now, let's see, maybe with top lane, we are able to see a first blood coming in. So far, Mr. at the rate is still being a bit pokey left and right, understandable. But oh my goodness, wait a minute, Rishi. And I do see they're just gathering up towards the gold lane. Beatrix is pretty low. Takes up the sniper as she should, just to poke from the distance. But with this, the first turtle will be coming up pretty soon. Bias is already in a position. Maybe towards the EXP though, the Carmel as well as the full lead. But not much of a poke happening, but they need to eliminate someone for now. And with this, comes the ultimate, and Minimind takes down the Aemon. Aemon just before the turtle. I don't know what was that positioning though. Oh my goodness, the amen being taken down is such a green signal for the YSS to take away the turtle onto the end. Look at that. Now, oh, okay, Harry Biscuit that did get the last hit because, Sekis was trying to get for the purple buff for his enemy. He was saving up his retribution. There goes Kumar Easy to King Solo. Mr. X takes a kill. The Fury of Phoenix really stops there. Mari Biscuit with the flicker. He is out of the way, but does not does Mr. S. Sekis TZ also very low. There comes Mr. at the rate with the kill. Now, crazy enough, once again, they are trying to go for the enemy's purple buff, and I believe they will be really successful with that. So yeah, Mastermind come. Sorry, it's Mini Mind. Okay.
Did okay. Got a bit confused with the names, but yeah, I think Beatrix spoke already pretty strong with the bombard, but in front of him, Naaman might as well reconsider. And I am questioning Team Gravenoise' decision over there just to invade. They had the upper hand; they could just have picked off someone, but then they just went in, got a lot of stuns, gave away a lot of kills. So I would say the lead which they got back is again in the hands of Team Gentlemen. Gold lead also pretty equal for now. And I can see, more focus towards the gold lane. But the Eamon definitely needs to play a bit safe. He needs to wait for someone to give a set first before entering. Or maybe a team fight to initiate and then look for some flanks. Or else he'll get caught off guard pretty easily since it is a lead. But the Curse of Blood coming up along with the Fury of the Phoenix and the ult coming in. The implosion follows up, but Mincetar has been taken down. With this, a lot of folk coming in. Fury of the Phoenix, 3-man stun coming up. And with this, we also have the Irithel joining up. Not much, they will be retreating for now. Or Irithel might get a bit poke, get stunned. Tigger goes up, he uses up the sprint just to move away. So far, really looking good with what Team Gentlemen are doing, but at the same time, Gravenoise, their team composition states for the mid to the late game, they will have to, hold it out. But Kumati is looking quite low, 1 minute away, but no, Mr. Otherweight does not get it. Mr. S really looking quite low. There's a bit of a chase onto him, would be a bit successful, flickering out the way. He knows that he has to survive. If he gives out a bit more than towards the enemies, that's not gonna look good. But at the same time, also, look at that. Beatrix is able to pick up all the gold shields. Definitely, let's look at her already with the BOD, only 5 minutes into the game. She will be packing punches as per now. And with this Team Gravenoise though, that, save from the Tigreal onto the Carmilla was pretty on point, but with that we do have some implosions coming up once again. Okay, it was not an implosion, it was just second kill. And Irithel falls off once again, but I do see another skirmish happening. The, they're just trying to poke up onto the Tigreal. Dash coming up, the volley, but from the flanks we do see the implosion comes in once again along with the Fury of the Phoenix. And with this Eamon though, takes down the Tigreal, but TICS, a double kill for him as the Sky Piercer is just getting stacked up left and right. Oh my goodness, look at this. They are not stopping here anytime soon. And on top of that, the mid lane, the pressure was right there. Top lane, the pressure was so perfect for Mr. At the rate as well. But let's see what is it going to be. Now again, Mary Biscuit being really cautious right there. Dodges up the skill at the right time. Now again, this kind of a map presence really saves and really saves your life as a mid laner. So let's see how the teams are trying to proceed onto the mid lane. It's kind of really surprising that even though Team Gentleman does have the early onto the name, but they kind of lost that early. I mean, just look at the two stuns connecting up. Valley not running away from the slow which Valley gives. Plus, Carmilla's first kill just got bapped, so I would say the damage is way too much. Her folks are also really, really annoying. So this Team Gentleman, they're just getting back, maybe just play a bit safe. And at the same time, in the top lane, I do see the Irithel overextending, needs to go back, use up the ult to just dash away, but is she still safe? Because I do see the teams gathering up once again. Carmilla with the Curse of Blood, 2-man stun connecting up. The volley follows up with something, but the sprint being used up just to move away. Meanwhile, we do see a solo kill, off-cam kill onto the YSS by the Eamon. That is definitely true. Look at them. They will not be stopping at 1. And on top of that, now that we are talking about the mid-game, it is just not over. Now again, Tigreal trying to get out of the way, but getting stuck between 4 people right there was just no escape route for them. Gentlemen are trying to pick up one last turtle onto their hands. And on top of that, I do believe they would be wanting to make sure SCRIMS won't be farming up. A little bit of a risky play coming in from the Ammon, given the fact that, Gentleman's team really gave out such a good set around the river area, which is trying to be taken off. Mari Biscuit really taken down quite low. There's the Ammon who does get stunned up there. Oh my goodness, taken down. SCRIMS, he finds that window of opportunity to jump in, takes away another one. Trying to go for the triple, but the King's calling comes in at the right time. And there you go. That's a triple. And the turtle gone away as well. The risk
was not rewarding right there. But oh my goodness, Tigreal, what a set right there with the flicker. Seki is picking up a maniac with the time though. It's just not right there. Mr. Rishi, he tweaked a little trying to go for Seki's easy and would be punished for that play. And Mari Biscuit this time around, it's just proving that why it is also a very good pick into the mid lane still. Yep, and with that, I do see Mari Biscuit play a lot of mages. I think the positioning as well as the amount of contribution he gives in all the team fights is pretty commendable, I would say. One of the good mid lane players in our scrims. And with this, the macro completely in control of Team Gravenoise. And that decision coming in from the aim was kind of questionable. His team needed him in the team fight, but he, instead of going for the turtle, when Team, Gentleman did manage to take out a lot of people, he went in for the orange buff, should have just gone in for the turtle. And with that, Carmilla managed to grab onto that turtle, that's another thing. Couldn't even get the orange nor the turtle. So I think Team Eamon really needs to play with the team. I know he's playing good when it comes to 1v1, but then again, the triple kill, almost that mania coming in from the YSS. I would say YSS kind of snowballing at this point. It's really hard to stop. So look at them, and just again the Fury of Phoenix does not give Minimind the space right there. Mari Biscuit, he's trying to get away. He knows the Venom Fury catches through right there. Mari Biscuit with his Purify onto his skill. And he's getting targeted by Sekifeezy, and he is unstoppable. Goes in for another. That's almost a wipe out that we are looking at, gentlemen. Where did they go wrong? Giving away the first blood and giving away every single neutral objectives as well. Yep, definitely. And with this 31k, it's almost a 6 to 7k goal lead in the hands of Team Gravenoise for now. An easy lord, as it was literally 4-man wipeout from the side of Team Gentleman. And the macro though completely in the control of Team Gravenoise. We can already see the Mincibar though. If we could see the builds, I think the Minci really needs to go in for some defense, especially the Radiant Armor, because even though he's the one who will give the sets, he is kind of the front line, but then he's getting absolutely shredded down. And Neotor, he should, start healing a lot since it is almost 11-minute mark into the game. But somehow the healings are still weak because the gold is way too low. And they also need to move away from that Carmilla. And 2-man implosion coming up once again. The Mino goes in trying to save someone, but the damage isn't enough. And a complete 5-man wipeout coming in for the side of Team Gravenoise. Pretty good gameplay. At this point, I think this is the end. Although there will be Team Gentleman, someone who might come back, spawn back. But look at the Beatrix almost inside the base. She is so fed at this point that she can just recall over there, and she knows that there will be no one who can take her down. Definitely, let's see what is it going to be. The Lord is really healthy right now. Now again, the Team Gentlemen are right here to make sure to get the defender, Mr. S, onto the front lanes, trying to make sure they would not be coming in. Oh my goodness, back lanes, there's a good amount of stun coming in. Mr. Rishi falls down. That's gonna be Seki's for you. Takes away double. He's trying to go for more, but the Lord taking that, and Mr. X takes away that shutdown as well. Mr. X, he picks up his Holy Crystal as well, but not being fortunate enough to use that all up. He uses up his passive just to make sure he survives, but no, the base will be taken down. Mr. 8 really tried to do something right there, shooing away all those minions, but it was just too much at this point. Yep, definitely. Plus that beautiful 4-man ult coming in from Carmilla. I would say pretty good sets from her side. And that fleeting time almost just reset her ultimate so that they could even take down the Aemon. I do see maybe they picked up the Carmilla just for the Aemon, because the Aemon was having a really hard time in front of the Carmilla. But with this, I think a pretty good game coming in from side of Team Gravenoise. So I hope the other team just improves. This matches after all. With this, we will be going in for a short break. Do stay tuned because we have more matches to come.
Well, good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Algambo Esports Mobile Warmup Class Series. One new day, another week. We are here back into this scrims, and this is your boy STZ with Debbie around me for the game number 2 of the night. First pick of this game goes to the side of Team Will of D. I mean, we have been seeing this Will of D team performing well in the scrims, but not sure that how they're going to perform in this game against Team Justice. Okay. Justice with X and S. Oh, okay. That's kind of tough to see, but hey, as we are looking forward to what Will of D can do again this time around, because they always sucked us with kind of some different kind of playstyle or even a draft as well. So I think Justice is kind of new for me here, so I'm gonna presume that they might know what to ban away here, because look at this. Into the banning phase already, into the draft, we see the Paquito and the Glue banned away, as well as the Marshall and the Mincitar. That's a weird choice. Yeah, that's way too. I'm not sure that why they banned this Mincy, but maybe someone from Will of D might gonna use it, or a fear about it, or maybe they're gonna use Phobius or a Kai kind of thing. That's why. But really, not into the meta. It's fine. If they just want to ban it, maybe having some strategy behind it. But for the side of Team Will of D, I'm definitely sure they're gonna ban the Freya, or maybe onto the Chushin. There's 2 of the picks, or if not this 2, then into the mid, another one that is God. I am not the only one Okay, bound by these chains. Butterflies. Alright, the Forest will be banned away, and the Celine. I think, this time around, into the Jushin ban, Will or D can actually pick up the Freya as well into the first phase if they wanna play the Freya, because Freya this time around hasn't been the very best here. It kind of is a good choice on some players, not all. And that kind of stick with it too. So this will eventually be coming down to how comfortable the player can get. So if they want to play out the Freya into the first phase, then I think it's completely fine for Will of D to go for it, because they can actually flex it out into the XP as well. But then Atlas is still available, so what do they go for? Gord! Gord first pick? Okay, so they let go of the Freya. You let go the Freya, so did the Kufra coming out from the Justice here. Now they banned the Jushin as well as the Mincy. So there is a huge chance that they might gonna go for the Lancelot or Fanny kind of pick into their jungle. But Will of D going for the first pick God, banning out the Phobius. I mean, really. So this is actually a thing from them. Like, you don't want to grab that damage EXP kind of thing, but then you have a chance to go for the Benedetta, but you're gonna get some strumble out from this Kufra. At last, with a Lapu-Lapu, okay. Okay. So Lapu-Lapu is kind of a hero. Okay, Atlas is what we were expecting to come to from Justice instead. I mean, or even for Will of D instead of the Gord. But then they already get the Atlas, so they already get the Kufra. So it was kind of safe to say that they can pick out the Atlas, because there's no threat of a Matilda to come through. And with the Atlas coming through, it's kind of weird that they're just prioritizing to the Kufra first, but Justice are very good onto the carry pick here very early as well. They are not trying to flex out on where the Freya is trying to go here. So with the combination coming through from the side of Will of D, because this is a Gore and Atlas combination which always have found very, very positive win rate around the tournaments, so I think it will work really well. And Ash, I kind of feel iffy about picking out the carry when you are against an Atlas, because you're kind of forced to go for the Purify, and without the flicker, carry is usually a very, very sitting target. Of course, into the late phase only you will have the damage spike, and you have to wait for that. But at the same time, Devi, I believe not going for the Kufra in the early phase. You could have gone for something in the mid, because now Will of D might gonna ban those mid laners. Yep, the lead being taken out, but Eve is open, so it's a 50-50 chance for Justice. They did well into the drafting, I'll say, because of Will of D's second banning choice. They went for a ban onto the Ling. I was not expecting the Ling ban though, but okay, like Ling. I heard somewhere like we have seen Ling and Fanny getting prioritized in MWI. Yep. It's Dodo into the MSC, so maybe that's the reason we're going to see this Ling ban Fedrin coming in here. Okay.
I feel like they ban out the Ling because they already have the. Oh wait, never mind. There's no much of a frontliner Chivalry is still. dead, But yeah, with the and Freya and the I carry will coming through, I revive think it. it's kind of weird to say that they ban out the Ling. I understand, but yeah. Maybe they don't want to play the side lanes as much. Where there we go, it's gonna be the answer. They pick out that they ban out the Ling so that they will be at least having a better time with the clean here and with the ban onto the Valiant as well. Do they want to go for a bit of a tankiness into the jungle because What's your you don't name, ban out the boy? before you go for last, Oh, Balman. How do you feel about the Balman though? Yeah, I feel good. Against the Fedrin, I feel good with the Valmon. And so do the Clint, because Clint is actually a direct counter for the carry. So definitely, lane to lane matchup. The Clint gonna counter this carry. So do Lapu Lapu will get a sustain. That's a Kimmy coming in. But literally, I was thinking for a Lunox. I don't know why, but Mm, I was hoping for a Lunox. Lunox to barge in so that the Lunox carry combination will be there with a Fedrin on to the front. Yeah, you are right here. So if the Lunox can come through, it's gonna be very very good against the Ballman as well. But yeah, I feel like Justice kind of have a lot of damage already here because the main front line is not gonna be the Kufra, it's gonna be the Fredrin. So you kind of need a bit of an AoE that the Fredrin can work around with. So the Kimi is kind of an overkill here because now they're gonna be dependent onto that late game, very very late game, and their solo frontliner, even the Fredrin, he's not an early game jungler. This is what it's kind of confusing to say because when you think about utility jungle, you have thought that the early game it's always going to be early game for them. No, for the Fredrin it's kind of different. You kind of need at least 3 item power spikes so that at least you will have that tankiness that is required for you to stand into the front line to make that work. And so this might be a bit of an expensive draft from Justice, which Will of the can actually punish into the early games. Definitely, Debbie, and this will be the game, guys. Justice versus Will of T. We're here into the land of Dawn, and this is a Balman. Mjol's onto the Balman, and Fedrin will be into the hand of Roshi. So definitely going to see what will be happening right now from both these sides. So Roshi has went for a normal rotation to the buff, I mean the blue one. Then he went for the red, not to the side crypt. Balman started the new rotation of the jungle, and at the same time we're going to see that early game aggression from the Kimi does have a chance to get onto the mark. That's a knock-on coming in. Balman coming in for the lethal. Gonna grab it onto his way, but got a little bit of damage, a poke from the Kimi. Okay, now with the early game momentum being built up away by Will of D there, they will be able to have a good control onto the map here, which is kind of necessary here because their lineup is made to do that, to control that early phases of the game, so that at least they will stop the snowballing from happening from the side of Justice and then not get them the item power spike that they require here because 3 of their members have been dependent onto that items, so that's what they actually want to do here. A bit of a meta into the XP side as well. A bit of a better clearance coming through from Alpha's D onto that Freya will actually help. Dread Phoenix was about to get down, but he managed to go back at this moment. First blood secure. Neol's gonna go in for the Kufra. At the same time, we're going to see the Clint going down there onto the top side with the help coming out from the Fred. Okay, this is a kind of rotation that is gonna be actually catching them off guard because you wouldn't expect a utility jungler like the Fredrin to rotate up onto the gold lane side opposite of the turtle lane, and that's kind of caught it off guard. Look at that though, turtle started. Did not use the flicker even, I don't know why, but now the turtle started. We're going to see the Freya trying to take out this Mingo Flamingo. Neo is gonna grab up the turtle. Freya, out of Mingo Flamingo trying to send it down. Okay. He's gonna take the kill as well. That's the outplay coming out from Mingo Flamingo. He managed to take down the Freya with the turret damage. Oh nah, that's kind of iffy move coming through from Alpha XD. You are expected to get at least a kill onto the backlines when you pull out the Valkyrie's Descent, and it's not expected for you to get killed by that said hero. But yeah, onto the other side, it's definitely gonna be a bit of a control back over to the Will of these hands because they are able to achieve all that early game momentum. Look at that. Retribution slow it down, goes for the Wong, finds skill on the Fedrin, and now gonna go for a double now. Ripper trying to go back, does have the cycle eye there. So, right decision not to go for the chase.
You know, the better you don't, the lesser you chase, the better it is for you to grasp that timing back and then find perfect momentum. Another jump though. Not gonna happen. AoE coming in with the traction pulse. That's the time switch, but Ally goes down. Oh, and Battling, 2 people caught in the way. Double kill. Gonna go for a triple at this moment. We can see that Aegis coming in. Light will be used. Balmond is spawning in the air with a Mystic Gush. Will take it down beautifully onto Asiga as well as Menace. Alright, Menace. Not really the perfect spell to take here when there's so many dive. It was either the Purify or the Flicker there, but yeah, I don't think the Aegis will be working against the lethal counter onto that Balmond, or neither the Sky Piercer that might come through from either the Gore or the Cleaner. So it's kind of weird to see an Aegis being brought into the table by a carry. But other than that, it's still gonna be a bit fun because if they are able to drag this game to the later part, at least a 15-minute game, then this will be eventually turning around for the side of Justice. Other than that, Will of D will actually have a very much greater time in contesting all of these objectives. You have accept it with the Hanabi, but not with the carry at this situation. Oh, the Secret Show went in there. He doesn't have the flicker, so he's gonna get punished. And that move is slid after the clear down play happened. And we're gonna see the Freya coming in for the punish. Killing Freya out with the Fredrin as well. Mingo Flamingo securing all those kills. And now the team gonna go for the turtle. Even though the Balmond goes down. I mean, the Balmond finds a kill. Now he's gonna grab the turtle with the Retribution. Maybe this Aegis thing is literally haunting down this carry right now. Actually true. You know, is this not a battle spell that I counted as a battle spell? Unless you are a Hanabi like you already said. So that's kind of weird. But look at the itemization so far for the Gord here. Mingo Flamingo is the one trying to go for the Sky Piercer too. So they're gonna go for the 2 Sky Piercers here. And on top of that, Menace is trying to go for another LS battle. That's gonna be a bit of penetration and 2 damage as well without the boots too. But top lane, Menace, that's a very big trade out. I don't know what happened to both of the Menaces. Gonna go in there with the kite. Traction Pulse used as well, but now you're getting chased as well. Now it's a retaliation coming out from the side of Team Will of D. As you mentioned about the Aegis thing, I prefer it with those heroes which does have the immune, like Valir, Hanabi. They do have the Purify inbuilt into them with their skills. Yeah. So Edge is gonna work with them, but with a carry, no. Oh, that's a beautiful trap down onto that Freya. Can manage to survive there. Easy peasy for Will of D. Alpha XC falls down. Now I'm gonna go for the British Spider. Caught in the hand. Can he go back? No, good punish into the kite formation. And that will be the Kufra. Invasion is happening, but the Retribution comes with the form. And the Fedrin gonna get the blue buff. Okay. You know, this is kind of tough to say the least because from the side of Justice, it's not really the best case for them because they haven't been able to find the perfect rotation because everything has been done pretty much easily by Will of D. They're kind of stopping into their own map as well. But there are some instances where Manage haven't been able to walk away from all of those onslaught where he could have survived. And there we go, Mingo Flamingo still with the Sky Piercer. So Will of D have 2 Sky Piercers already. And now the worth of Aegis is lessening down again, twice this time. Turtle appeared into the lineup down. Till now, it's Team Will of T getting all those turtles clean. Got the kill there. Does it? Oh, he used the flicker to go battling on 3 people. Worth it. Mingo Flamingo coming for the follow. Double, triple, and that might be immediate. Freya coming in for the Valkyrie decent, and now he's getting stunned as well. Trapped up for the Frozen member, and that will be a killing spree for Neol. 4-man down with the turtle coming in the hand of Team Will of D. What a perfect execution. It's absolute massacre at the top lane. The Fatalings. Indeed, one of the best setup at that point. And you don't have a counter for it. No Purify. And it's a like a very massive wombo combo we could see as well. And
there's a lot of true damage all over the place because the clean was available. He have the Sky Piercer too, and there is also a Sky Piercer for Mingo Flamingo as well. And there's the lethal counter that is also a true damage. So there's no way that the tanky frontliners from the side of Justice will be able to stand a chance. And on top of that, there was Herman jumping in with a follow up onto that Lapu Lapu. He is also on the War X. So now it's kind of weird to see that they're for Ricci onto that Fredrin. He's trying to go for the full build onto the helmet too, but he could have opted to go for another defense item so that at least he'll be able to tank out and stay onto the front line, because one item Fredrin will not work well into that front line. You need someone to stand together with you. Seriously, like the way, if you have seen that, like first they take out the Purify from the Kimi, they baited it into the mid lane, and then they grab it onto the Kimi top. So definitely, like Team mlbb are playing so well with this trap. Having a little bit of mistakes from Justice is actually favoring them out. Oh, missed the moment now! It will get connected. That last goes in for the final blow. Flicker comes in for the defense, and now again, see, the Kimi doesn't have the spell. Kufra doesn't have the spell. They're trying to do it every time, trying to take it out, and now onto the top lane. Carry. She doesn't have anything to go back. It's just the Aegis, and she will get punished there. Mega kill. Neols. Okay. Everywhere across the map has been been good from the side of Will of D, and Justice cannot do anything about this time around. But yeah, Alpha XD, he can do the one thing that the Freya is capable of, that is trying to chunk down the turrets as much as possible and not join the team fight because they are onto the losing side. But then it's still not gonna be good enough because the other side has been trading out quite well. They took out the outer turrets too, and onto the bot side, onto the mid side as well. They are trying to focus a bit onto the mid turret, which is what they have been standing. But with the Lord coming through here, Justice, if they have these mid lane turrets still standing, they still have a chance. So what do they do here? Okay, let's see. Retribution 50-50 smite. I know! They're gonna get the Lord there. Godlike secured under the hand of Mingo Flamingo, but doesn't matter. They got the Lord, and now they're retaliating back. But in the meantime, a light goes down. King strikes in. Double for the Glen. Menace falls down as well. The two of the members, they goes back with the Lord into their hand. Now they're chasing him down. Flicker being used at this moment. Assi is going back there, but doesn't matter. Somehow Justice will give them some time to get recover from the goal loss, the deficit they're having. But can they? That's actually kind of worth it for Justice because they don't have anything to lose there, right? Because even if they die, it's not gonna be a shutdown kill, or it's not gonna be that big of a kill that they have to trade out. They're just gonna have to trade out the Lord, and that's what they are actually doing. Even though they lose out onto the mid side, they were able to stand so much long of a chances. At least they have the Lord onto their side, a bit of a goal as well, and a bit of a lane that they can play around with. So that's what they have. They are able to achieve with that just one Lord. But other than that, Will of D, they have to be mindful again. They cannot drag this game to the 15-16 minute, because if they do that, there's gonna be a lot of damage coming too from the side of Justice. Definitely. The way right now everything is rotating down for the side of Team Justice is really not in their favor. But at the same moment, if they manage to give some perfect blows into the backline, that is Mingo Flamingo as well as Menace too. Okay, two of the goal laners named Menace. That's what I said, right? The goal laners, Menaces. But yeah, they are doing well. But then for Menace onto the carry, he just had to bring the Aegis man. But wait, okay, they leave. So top lane is definitely going to be taken down by Alpha XD again. So this is what that one Lord rather, did to the team, right? Justice, they have been losing a lot, but they got one Lord, and now they are actually finding some ways to have a good comeback. They did have that thing because look at it, like they got the mid tier 1, then was about to crash into that bot tier 2 as well. So yep, slowly they're trying to take out the tiers and give some map expansion from them. But then again that thing comes in that you need to take out Mingo Flamingo as well as Menace 207 if you want to take on a proper fight. Even the Bauman, Neols, he is having a good stack right now. So definitely, like,
their team is having a huge goal lead, huge item gaps against you. So Yeah. you need to play safe. You need to give time to the Freya and the carry to get the spike. Then only you can go for the fights. Yep, slowly but surely they can find something out there. So that's what they want to do here. A bit of a solo push coming through from Alpha XD yet again. And now it's kind of surprising enough to say that Justice are actually able to hold on onto the buses there. So look at that. Okay, trap down. Pulse used now. But again, that same trade is coming in. Oh, Freya comes in Valkyrie, decent use, but now he's trying to take down Mingo. Flamingo is getting away from the trade. Will be pierced out by -207 here. 2 kills grabbed on, and this time you don't have the wildcard entry, Freya, to take down the Lord, and they're going to chase down this veteran as well. Mystic Gust highly bursting out. Legendary for Mingo Flamingo. Easy Lord coming in the way, or are we going to see something here? Like Traction Pearl stealing out the Lord, Debbie? That's kind of how. Blue team has slain the Lord. Okay. I think my friend is having some problem here, and with this you're gonna see that the rotation from mlbb into the Lord fight was totally onto the mark. Now they're going with the Lord. The lane sync is kind of poor, I'll say, because into the mid side. Okay, no, it's getting synced. It's getting synced now. But it's a 4-1 rotation. Top 4, bot 1. But action pulse huge, unstoppable for -207. Patling's connected as well. From the behind, we're gonna see the Kimmy trying to take down some damage out of him. But that move with the Mystic Gush, Mingo Flamingo, bullseye is double for -207. Lord slamming out of the top. We're gonna see the Menace coming in as well. But does have the Aegis, he got used as well. And that's last going in for the initiation. Got down. That's a godlike for -207. Menace falls down. He grabbed the kill out of that cloud, but blocking down the base. Over the way. Wipeout happened. Ground open. And this will be it, guys. Team Will of D gonna get the win against Justice with a proper execution and a proper domination. That was purely well done. Rotation, clean, crisp as well. Everything so much better coming through from the side of Will of D as well. For Justice, though, this is what we were talking about. Their lineup was too expensive. There wasn't any kind of response that can come through, especially against the Atlas or even the Gore. There was no dive whatsoever that can actually handle the Gore too. And yeah, they will be finding some kills along the way, but it was not worth it at all. That one Lord still coming through from Alpha XD is kind of helping them to stay into the game for a little while. They could have had that moment, but early game wasn't that good for Rishi Ackerman as well, because he's on a Thunder Belt, which is not kind of, it's not necessary to go for the Thunder Belt. You could just go for those direct tankiness, or maybe even the brute force and then the radiance, so at least you can stand a chance to the crowd controls coming through from the side of Will of D and able to hold on onto your front line, so that at least there will be chances for your back lines to stay stronger there. And I think Will of D understand the assignment very, very well. They know that the early game was theirs and they just hold on to it. Well played, team Will of D. They literally did what you say. And at the same moment, I believe Justice will look after their draft a little bit, through their spells as well as the rotation they did in the early game. I mean, they do have a great draft, if you'll actually see it. It's a Kimmy, they need an AoE, they do have the Fedrin, but the execution part was so much bad from them. But it's a Scrim. That's why you're playing the Scrim. You want to learn something, you want to grow onto it. So definitely you'll be coming back stronger. I'm sure about it in the next day. That will be on Wednesday. So guys, the Wednesday Scrim link, like the registration link, is out there in websites. If you want to register your team for it, go on, register your team and make sure you play the Scrim and make yourself a little bit, better. With this, me and Debbie will be taking a short time at MOBA1 Class Series, coming back soon for the next game at Algambo Esports. Don't go anywhere, stay tuned.
स्वागत है सभी को अल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स के मोबा वार्म अप क्लास सीरीज में। मैं एशटीजी और मेरे साइड में है शिनरा साइतामा के लुक पे उनको आज हम लोग फिर से देख रहे हैं वापसी करते हुए। और आज ये गेम होने वाला है वैलियंट गोल्स बनाम टीम थर्ड गेम वैलियंट गोल्स बनाम टीम ईगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स। ईगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स का पहली बार मैं जो है कास्ट करने वाला हूँ गेम, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर पिक्स एंड देयर कंफर्ट काउंटर वगैरह वगैरह। बट वैलियंट गोल्स ने जितने भी मैचेस खेले उतने मैचेस में उन्होंने डोमिनेट किया है थ्रू आउट द होल वार्म अप क्लास सीरीज। तो देखना चाहता हूँ किस तरीके से ईगोइस्टिक स्पोर्ट्स के अगेंस्ट खेलते हैं और ईगोइस्टिक स्पोर्ट्स ने कितना ज्यादा जो है ट्राई किया है टू मेक थिंग्स आउट फ्रॉम द वैलियंट गोल्स ट्रम्प। क्योंकि हम देखते हैं कि जब किसी टीम के अगेंस्ट हमारा मैच होता है तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो होता है उनका कुछ मैच को वॉच करना, ताकि हमें पता चले कि उनकी क्या कंफर्ट, उनकी क्या ड्राफ्ट रहती है। एज अ कास्टर हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले टीम्स के बारे में, कास्ट करने में इजी हो, और टीम्स को भी जो है ये पता करना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि सामने वाला कौन से जंगल पिक के साथ क्या रोटेशन के साथ जा सकता है। तो लेट्स सी इगोइस्टिक ने अपना होमवर्क किया है कि नहीं, और वैलियंट वो इस न्यू टीम के अगेंस्ट कैसा खेलता है। वी गोना सी दैट पकीतो क्लू का बैन आता हुआ और इस तरफ से मार्शल, दूसरा बैन शायद से जूशिन। क्या लग रहा है आपको, जूशिन या प्ले? देखना पड़ेगा। चलिए उसी के साथ गुनीवर बैन आते हुए दिखेंगे। थोड़ी सी See खबर value in ये me? भी मिली थी एसटीजी की वैलियंट You घूल्स की should. जो लाइनअप है उस पर थोड़ा सा चेंजेस आज हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकते हैं कि कुछ नए खिलाड़ी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि न्यू लाइनअप जो है वो टेस्ट होता हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि हमें जो उनका यूजुअल गेम प्ले है उनसे थोड़ा सा अलग आज There's गेम no प्ले आता time हुआ to दिख सकता है। chit और chat. उसी के साथ बात करें यहाँ पे बैन्स की, तो आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे गॉड को बैन किया गया है। दूसरी नवी ओपन छोड़ा हुआ जाएगा। चलिए एटलेक्स के साथ जाती हुई दिखेगी टीम Now a card ई enters स्पोर्ट्स। the और उसी के scene. साथ दूसरी तरफ बात करें वैलेंट गोल्स की तरफ से आएगा डिसंगेज अकाई सबसे पहले उठा लिया जाएगा। और अकाई की बात करें तो आई थिंक जंगल की साइड ही जाते हुए हमें देख सकते हैं, लेकिन अभी फ्लेक्स पे क्या रोम की तरफ भी जा सकते हैं। कई बार हमने देखा ऐसे कि लाइक सामने टीम को चकमा दे जाती है, टीम दिखाती है कि अकाई जंगलर उठाया, बट एंड में वो रोमन निकल जाता है और जंगल पे कुछ बढ़िया हीरो जो है वो उठा लिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए एटलस के सामने ना यही स्थिति रहती है। आपने एटलस पिक किया, सामने जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट यूटिलिटी है वो अब जो है वैलेंटीना वो उठा लेगी आईएमयू का इस्तेमाल करते हुए। तो एक यूटिलिटी जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट थी टीम में वो आपने सामने वाली टीम को दे दी है। My kiss grants you immortality जी अब बात करें यहाँ or पे ना death. जी, और बात करें यहाँ पे वैलेंट घूल्स जिस तरीके से खेलती है उनको पसंद है ये सब यूटिलिटी वगैरह। वैलेंटीना की बात करें, पिछले बार भी जब खेल रहे थे वैलेंटीना तो उनकी तरफ से जितने भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप चेन टुगेदर या फिर अपना जो है फेथर लिंक्स जितने बार भी आया है हर बार ही उन्होंने हर जगह से बोल सकते हैं कि आप एक अच्छा इनपुट लेके आए हैं अपनी टीम के लिए। और एटलस को ही बहुत ज्यादा परेशान किया उनकी अल्टीमेट बार बार चुरा की। तो इस गेम में भी थोड़ा वैसा आता हुआ हमें दिख सकता है। Let them अब play यहाँ the पे एलएस उठा hero. लिया तो एक बोल सकते हैं I कि will आप be the फ्रंट लेन truth जो है this थोड़ी सी world आपकी स्ट्रांग यहाँ पे desperately रहने वाली है। needs. लेन क्लियरिंग जो है वो आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो लेट गेम में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। तो गेम को डिले करवाना है बेसिकली, उस पे जो है आप बोल सकते हैं कि वहां पे उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, जिसके कारण कैरी जो है लेट गेम में उनको शाइन करने का मौका मिलेगा। अब फटाफट से इनको देखना पड़ेगा कि हीरोज इस तरीके से उठाने पड़ेंगे जो थोड़े से रेंज टाइप के हो, जिनके पास डैमेज हो। आई थिंक मे बी लेजली वगैरह कुछ हमें आता The हुआ दिख immortal सकता है, one क्योंकि chose me ट्रू to डैमेज भी vanquish the रहेगा तो इजिली उनके shadows that पास plague this world. मौका रह सकता है। तो लेट्स सी, या लेजली आ सकते हैं या फिर क्लिंट और ऐसे हीरो जो हैं कुछ वो आते हुए हमें दिखेंगे। हो Come सकता है on, कि बैन में ही Dexter. वो It's our हीरोज हमें देखने को मिल showtime. सकता है। जी हाँ, क्लॉड को बैन करते हुए यहाँ पे दूसरा They बैन call शायद me से a मॉस्को hero को करेंगे। अगर because I मॉस्को नहीं तो saved फिर my जंगल पे nation from falling मोस्टली apart. फेडरिन को भी बैन कर सकते हैं। ईशन शिन सुयू दोनों जो है अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, इनटू द जंगल मेटा पे काम कर रहे हैं। ईशन शिन तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी फिर से। आई मीन जितनी बार इस हीरो को नर्फ करते हो, डेफिनेटली वो एस टीयर में अभी है नहीं, बट ही इज एन ए टीयर राइट नाउ और ए टीयर में बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। आखिरी बैन यहाँ पर आता हुआ मॉस्को या फिर जंगल पे फेडरिन, इन दोनों में। अच्छा, फेडरिन तो पहले से ही बैन है तो I शायद से am बाक्शिया भी कर सकते हैं, vengeance लेकिन बाक्शिया एंड अकाई incarnate. वो थोड़े से जो नर्फ के बाद इतना ज्यादा चल नहीं रहे। जी हाँ, मॉस्को एक अच्छा स्थिति देना चाहते हैं कैरी को, यहाँ पर एक अच्छी कंफर्ट पोजीशन देना चाहते हैं उन्हें, ताकि उनके ऊपर ज्यादा जो है वार ना हो। वैलेंट गोल्स की पहली पिक इस सेकंड पिकिंग फेज पे। No one can स्टार्टिंग में escape उन्होंने my अकाई पिक किया था इनटू द refreshment. जंगल, सो यहाँ पे बदांग के ऊपर जाते हुए मुझे लग रहा था कि ये अकाई तो रोम जाने वाला है, बट नहीं, ये अकाई इनटू द यही जंगल होता है एंड है, बदांग कमिंग इनटू द रोम। यही
यही बोल रहा था मैं एसटीजी, दिमाग के साथ यही खेला जाता है। ये आपको बताया जाता है कि वो जंगल जाएंगे या रोम जाएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और जिस समय जो है ना, ये देखो एक पूरा बोल सकते हैं कि आप रोमांचक बना हुआ है। बदांग जो वो आगे रहेंगे डिसंगेज के लिए या फिर सेट बनाने के लिए। पीछे से जो है आप बोल सकते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जो है वो वहां पे आते हुए देखेंगे अपने अल्टीमेट के थ्रू। कैरी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्क करने का प्रयास किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ना, पूरा सेट यहाँ पे लगाते हुए दिखेंगे। और बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेट बन सकता है। बदांग अगर जाए अपनी वॉल का इस्तेमाल करते हुए, हैवी स्पिन अगर अकाई लेके आते हैं तो वॉल के ऊपर लगातार पुश किया जा सकता है उनको। देखिए वहां से थोड़ा सा डिसंगेज के लिए जेटियन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है एसटीजी की बहुत ज्यादा यहाँ पे मैजिक का सहारा लिया जा रहा है। सिर्फ आप एक कैरी को अकेला छोड़ रहे हैं डैमेज के तौर पे। अगर उनके थ्रू से जाते हैं रेडिएंट वगैरह आ गया, तो आप एक रेडियंट से 3-3 हीरो आराम से, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप उनके जो डैमेज है वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अर्ली गेम पे आप अगर वो मेज रोप भी बना लेते हैं तब भी बहुत सारा डैमेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली। और अचानक से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरिथल का आगमन होता हुआ। बहुत दिनों बाद इरिथल देखूंगा, बट अगेंस्ट कैरी डज वर्क, सो डेफिनेटली लेट्स सी हाउ इट वर्क्स अगेंस्ट द काई फॉर दिस हाली, बिकॉज कहीं ना कहीं हाली को थोड़ा सा मुश्किल होता है एक टैंक जंगलर के अगेंस्ट खेलना, बट उन्होंने फिर भी जो बर्स्ट के लिए गए हैं। इसी के साथ लाइनअप जॉन पे स्वागत करता हूँ आप सभी का फॉर द गेम नंबर 3 ऑफ द नाइट। इगोइस्टिक स्पोर्ट्स बना वैलेंट गोल्स एट मोबा मोबाइल क्लास सीरीज में एसटीजी मेरे साथ रहेंगे शिनरा। वीक 30वां और दिन पहला। अगर आप वेडनेसडे स्क्रिम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिंक इज इन द बायो गाइस। हमारे यूट्यूब के इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैट पे भी मिल सकता है। तो आप वहाँ से हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी इन्फो अबाउट द नेक्स्ट इवेंट्स एंड नेक्स्ट स्क्रिम को पता चल जाएगा। एचओके के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं, एचओके स्क्रिम पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। अगर आपकी एचओके टीम बनी है, आप एचओके खेलते हो, तो फिर आपको भी हम वेलकम करते हैं बड़े दिल के साथ। इसी के साथ मैच के अंदर जाते हुए जंगल नॉर्मल रोटेशन नहीं बल्कि द न्यू रोटेशन से स्टार्ट किया है। शिंडा भाई ने आज ही डाला था इंस्टाग्राम पे वो न्यू रोटेशन कैसे चलता है, तो अगर वो भी जानना चाहते हो तो आप शिंडा भाई को फॉलो कर सकते हो। और टॉप लेन पे यहाँ पे एक ड्रैगन बना एलिस। एलिस यहाँ पर कहीं ना कहीं विनिंग लेन खेलते हुए कैन ही मैनेज टू गो, यस ही विल। फर्स्ट ब्लड सिक्योर करते हुए यहाँ पर टीम ईगोइस्टिक। जी बिल्कुल। और अब देखिए स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। खाता जरूर खुला है यहाँ पे टीम एगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स का। और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर बात की जाए वैलियंट गोल्स अभी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पीछे खेलते हुए दिखेगी। डेडली मैजिक का इस्तेमाल किया जाएगा, रेतेल वहां से बचते हुए निकलेंगे और वो डैमेज जरूर लगेगा उनको थोड़ा सा। टीम जो है पीछे की तरफ आती हुई दिखी अभी भी। और देखिए यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया है, एलिस को थोड़ा डैमेज देने का प्रयास, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये देखिए थोड़ा स्टन लगेगा यहाँ पे और वहां से बचते हुए निकले हैं। बैकअप आएगा तुरंत ही मेज की तरफ से, एक बढ़िया जो पोक है वो आता हुआ दिखेगा। बदांग बहुत ही मैची पे फ्लेकर का इस्तेमाल और उसी के साथ रंबा वो धाराशायी होते हुए दिखेंगे। डबल किल जो है यहाँ पे 2 किल वो निकाल ली है टीम ईगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स ने। और अब चर्चर के लिए जो टीम है वो आती हुई दिखेगी। अच्छी खासी पोजीशन, पकड़ अच्छी खासी बनी हुई है अभी। अब जैसे कि बोल ही रहा था मैं, यहाँ पे तेरे अकाई आते हुए दिखे जरूर है, वो पैसिव जरूर जीतियन घटा दिया जाएगा। ब्लैक ड्रैगन फॉर्म आता हुआ दिखेगा और उसी के साथ जोन आउट करना प्रयास कर दिया सीधा जंगलर के ऊपर वो प्रेशर बनाने का। लेकिन जंगलर यहाँ पे आएंगे, मेज का वो स्टन आएगा, फिनिश ऑफ द फ्यूरी और उसी के साथ उठा चल यहाँ पे ले लिया जाएगा। और ड्रैगन मार करते हुए दिखे यहाँ पे हाले को और उसी के साथ उनको जो है धाराशायी कर दिया। लेकिन अभी भी फाइट जो है वो खत्म नहीं हुई। हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया है, रोकने का प्रयास, वॉल के ऊपर पिन किया जाएगा। दूसरी बॉल लगाते हुए दिखेंगे, वेतलिंग का इस्तेमाल किया है, अंदर की तरफ से बचने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम एचपी पे यहाँ पे बच के गए हैं और अंदर की तरफ जो फाइट है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। पदांग वहां से बचते हुए निकले, अभी भी कर्च लगेगा जरूर है यहाँ पे एलिस के ऊपर। हील होने का जो प्रयास है ड्रैगन वो करते हुए दिखे। बॉटम लेन की बात करें तो एमएम के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। टीम एगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स उनकी तरफ से मैं बोलूंगा बराबर का रिटेलिएशन आ रहा है और लाइक मैच करने का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहते हैं अभी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए टीम एगोइस्टिक ई स्पोर्ट्स, उनका जो रोटेशन है वो थोड़ा सा क्लीन मैं बोलूंगा। उनको पता है कि इस तरीके से यहाँ पे प्रहार करना है। देखिए अंदर की तरफ छुआएंगे, बचने का प्रयास और अच्छा खासा स्लो आएगा जिसके कारण वहां पे रोकने का प्रयास किया है। टैंक को वॉल लगाई है लेकिन अभी भी पीछे हटे। मेज वो वहां पे मौजूदा रहेंगे इस समय अपनी टैंक को थोड़ा सा बचाने के लिए और उसी के साथ रिकॉल जाना पड़ेगा उनको स्क्रीन की तरफ। एमएम का ये थोड़ा सा जो एग्रेशन आ रहा है कैरी की तरफ से वो काफी अच्छा
बार बार मजबूर कर रहे हैं यहाँ पे अर्ली गेम पे रितिल को वो मिनियन यहाँ पे लूज करने के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट यहाँ पर टीम इगोइस्टी esports की तरफ से वैलेंट गोल्स के अगेंस्ट, और ये देखिए टॉप यहाँ पे मिल सकता है। एलिस का जो रोटेशन आपने बात किया, टॉप से बॉट आ रहे हैं, फुल ऑन फॉलो अप देते हुए वो दिख रहे हैं। थ्रो द रेन फ्लिकर के साथ अंदर गए, बट इस बार बैटलिंग से रोकने की कोशिश। किलिंग स्प्री सिक्योर कर चुके हैं, हेवी स्पिन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर शायद से एक प्रॉपर स्टन दे सकते हैं। जी हाँ, फिस्ट क्रैक का इस्तेमाल, और इसी के साथ कियोशी फॉल आउट करते हुए बर्स्ट आता हुआ। बहुत ही कम एचपी में क्या यहाँ पर बच पाएंगे, उन्होंने यूज किया है उस फिश बम्प का, लेकिन ये देखिए दैट्स अ गुड एस्केप। और इस तरफ ड्रैगन ने यहाँ पर टॉर्मेंट किया है एटलास को। ट्रेड की आप बोल सकते हैं कि मतलब आदान प्रदान किया गया है यहाँ पर दोनों तरफ से, बट टर्टल यहाँ पर सिक्योर करती हुई मैक्रो के ऊपर इगोइस्टी esports लूजिंग 1 किल गेटिंग 2 kills एज वेल एज अ टर्टल। मैं बोलूंगा कि इगोइस्टी esports एक अच्छे सेफर पोजीशन में है अगर आप कंपेयर करोगे आप वैलेंट गोल्स के साथ तो। बिल्कुल। और यहाँ पे कियोशी ने आइस रेट्रीब्यूशन लिया है। आई थिंक उनको थोड़ा सा ब्लड रेट्रीब्यूशन के साथ जाना चाहिए था, ज्यादा डैमेज आउटपुट आपको मिलता। उसके साथ साथ आप जो है इजिली फ्लेम रेट्रीब्यूशन के साथ भी जा सकते थे। आइस कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि सिचुएशन बच के निकलने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे स्किल्स है, आपके पास डैश है, आपके पास हैवी स्पिन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर कैसे बचेंगे। और एलिस की तरफ से बढ़िया गेम प्ले आया, ड्रैगन को वहां पे फिनिश ऑफ किया। दूसरी साइड की बात करें तो आउट नंबर अभी भी रहेंगे बदांग, बहुत ही गलत यहाँ पे पोजीशन में फंस चुके हैं, उनको पीछे निकलना पड़ेगा इस समय। और दूसरी साइड की बात करें वो लगातार यहाँ पे वो जो मिनियन का प्रेशर है ना वो लगातार खाया जा रहा है, जिसके कारण टॉप का जो लेन है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पीछे से आते हुए देखेंगे लगातार जो डैमेज है यहाँ पे वो हमें आता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया है, रोकने का प्रयास करेंगे एलिस, लेकिन वो डैमेज सोकअप आराम से करते हुए बचते हुए निकले। बिडिंग का इस्तेमाल अंदर की तरफ से आएगा अल्टीमेट, और रोकने का प्रयास मेज के ऊपर पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बचते हुए वहां पे निकलेंगे। डैमेज आएगा एमएम के द्वारा, और अच्छा खासा डैमेज दिया जरूर है, लेकिन हील एलिस बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन करती हुई जा रही है। उनको जो फार्म की जरूरत थी, जो आइटमाइजेशन की जरूरत थी अर्ली गेम पे, वो उनको मिल चुका है इस समय। 4-0-3 का स्कोर चल रहा है इस समय, और एलिस बात करें इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फटाफट से रेडिएंट और कुछ ऐसे आइटम्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप उनको जो है काउंटर कर पाए। और यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मिड लेन पे आपने उठाया है, बोल सकते हैं कि अगर कोई दूसरा हीरो होता मिड लेन पे तो वहां पे आपके जो चांसेस हैं एलिस को गलाने के वो ज्यादा बढ़ सकते थे। लूनॉक्स वगैरह होते तो आप इजीली यहाँ पे उनको मेल्ट डाउन कर पाते, लेकिन यहाँ पे मेल्ट डाउन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखिए पो कितना ज्यादा आ रहा है, लगातार डैमेज पड़ेगा, और मेज का जो डैमेज आ रहा है भाई साहब, पूरे के पूरे यहाँ पे बदांग सस्टेन नहीं कर पा रहे फाइट के बीच में, और लगातार यहाँ पे उनको जो है धाराशाही कर दिया जाएगा। मेरी तरफ गए हैं एलिस, सस्टेन करने का प्रयास, अल्टीमेट आएगा उनकी तरफ से, डैमेज दिया है, अभी भी बचे हुए मेज की तरफ से बढ़िया रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा। ब्लैक ड्रैगन फॉर्म अंदर जाएंगे प्रयास करते हुए, फेडिंग लिंक्स आएगा, डेडली मैजिक, और एक कमाल का कॉम्बो आता हुआ। इगोइस्टी esports इस समय डोमिनेट कर रही है, 10-5 का ये स्कोर अंतालिका। मिड का टरेट जो है वो टूटेगा, और उसी के साथ इगोइस्टी esports इस समय उन्होंने वो कमान थान ली है। और ये देखिए आइटमाइजेशन बनते हुए गए हैं जिस तरीके से अभी तक वो बोल सकते हैं कि रेडिएंट और वो यहाँ पे बनाना चाहिए था। अकाई चलिए रेडिएंट उन्होंने बना लिया, दूसरी साइड पे अगर बात की जाए ना तो मैजिक रोब आपको बना लेना चाहिए था अब तक। भाई मैं तो एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नहीं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा पोक करते हुए आगे बढ़ेंगे। एटलास को यहाँ पे टॉर्मेंट करने की कोशिश, रितल आगे आते हुए इसने यहाँ पे फॉलो अप दिया है, हैवी क्रॉसबो का इस्तेमाल, वो जस्ट वन हिट अवे, गेट द किल इनटू द हैंड ऑफ रितल देयर। टॉर्मेंट किया वहां पर एटलास को, इजी किल मिला वहां पे। वो सेट जिस तरीके के सेट्स यहाँ पर एलिस दे रहे हैं उनके थ्रू ऑफ द विन से, अगर फॉलो अप अच्छे से मिला ना एकदम से पूरी टीम वाइप आउट हो सकती है वैलेंट गोल्स की। तो उन्हें सतर्कता पूर्वक खेलना पड़ेगा अगेंस्ट दिस एलिस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्टेन कर रहे हैं एंड द सेम टाइम वो सेट्स दे रहे हैं। एक तरीके से वो यहाँ पर एक ट्रबल बन के खड़े हैं फॉर वैलेंट गोल्स, तो उन्हें देखना पड़ेगा, इस ट्रबल को पार करना पड़ेगा, इस ट्रबल को इफ दे वांट टू विन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वैलेंट गोल्स ने अभी थोड़ा सा पेस को ऑफ करने की कोशिश किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पेस बहुत फास्ट चल रहा है, फाइट्स बहुत ज्यादा लीड जा रही है, उसके कारण किल्स पे हम लोग ज्यादा ट्रेड देते जा रहे हैं इनटू द हैंड ऑफ इगोइस्टिक esports, जिससे उनकी गोल लीड बढ़ रही है, उनके पास आइटम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ऑफ करना है। फिर आपके पास डैमेज के हिसाब से सिर्फ इरिथल है, अगर आप
वैलेंटीना को काउंट करोगे डैमेज पे तो वो तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं मानूंगा वो चीज। तो डेफिनेटली कोशिश वहीं पिन किया है यहाँ पर वॉल पे, टेकिंग आउट द थ्रोन ऑफ द रेन, गोस बैक इनटू द सीक फर्स्ट जोन। क्या यहाँ पे प्रॉपर सेट हमें देखने को मिल सकता है? उससे पहले लॉर्ड इज इनटू द लाइनअप डाउन। Oh no! What has just happened there? Oh, deadly magic for Kirill को स्कोर किया है। Lightwell का इस्तेमाल बता goes down and that will be slain over the Valentina as well. They're gonna go for the pull and that with the Black Dragon following up at the same time. भी साधा हुआ क्यारी को यहाँ पर ट्रैक डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे for a double, but उनको उतना ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ पीछे हटने की पूरी कगार पे और बर्स्ट आ रहा है यहाँ पर ZTN की तरफ से। CK goes in for the stun and that will be it. ZTN ने उन्हें चेज किया till the death और उनको सीधा पहुंचाया फाउंटेन के ओर। इजी लॉर्ड, क्या लग रहा है शिंडा? विल देयर बी अ चांस टू सील दिस लॉर्ड आउट फ्रॉम द हैंड ऑफ टीम इगोइस्टिक? चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपके पास जंगलर नहीं है, जंगलर की पोजीशन नहीं है यहाँ पे इस समय। पीछे थोड़ा सा देखे तो अभी टैंक की तरफ जाते हुए देखेंगे, MM पीछे से आएंगे, उनका रिटेलिएशन आता हुआ सीधा फिनिश ऑफ करेंगे यहाँ पे मेज को। और मेज का डैमेज अगर आप नोटिस करेंगे STG जितने बार भी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। वो पोक उनकी तरफ से आप बोल सकते हैं कि बादाम को पूरी तरीके से मेल्ट कर देता है हर बारी। और देखिए यहाँ पे सस्टेन करते हुए जा रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे ई स्पोर्ट्स की, उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट है ना वो काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि अच्छा खासा साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 ऐसे खिलाड़ी हैं आपकी टीम में जो पूरा डैमेज सोकअप कर सकते हैं और पीछे से हार्ले जो है वो मार करते हैं डैमेज डीलर को सीधा। और कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत आती है। डेडली मैजिक का इस्तेमाल फिर दोबारा किया जाएगा लेकिन ज्यादा फायदा होगा नहीं, अकाई के ऊपर इस्तेमाल किया गया है और लॉर्ड जो है वो टॉप लेन से मार्च करते हुए आएंगे अभी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पे वेलियंट गोल्स वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बैक फुट में खेल रही है। उनका जो फार्म है वो जरूर आता है, देखिएगा उधर से वॉल जरूर लगाएंगे, अंदर तरफ जाएंगे, फेटलिंग का इस्तेमाल और एक कमाल का कॉम्बो 4 बंदों के बीच फंसेंगे। ब्लैक ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया है, एक अच्छी बस्ते में निकलेंगे लेकिन एलिस वहां पे मौजूदा रहेंगे, उसके साथ पीछे से कैरी आएंगी और एक के बाद एक जो टीममेट्स है वो उनके द्वारा से होते हुए दिखेंगे और ड्रैगन अकेले बचे। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं इस लॉर्ड को और मिनियंस को अकेले कोशिश करना चाहते हैं। डेडली मैजिक आएगा, फिनिश ऑफ होंगे और उसी के साथ ये स्थिति जो है खत्म होती हुई जाएगी। क्रिस्टल को लॉक किया जाएगा और उसी के साथ टीम ई स्पोर्ट्स वो इस मैच की विजेता बनती हुई जाएगी। वेलियंट गोल्स उनकी तरफ से बोल सकते हैं कि लेट गेम पे ज्यादा फायदा मतलब मिला नहीं उनको। अगर लेट गेम भी एक थोड़ा सा होता काउंटर अटैक आने के चांसेस बनते, लेकिन ये गेम जो है मिड गेम में ही खत्म हो गया, जिसके कारण टीम यहाँ पे अगर बात करें वेलियंट गोल्स इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हुआ था दोनों टीम की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ब्लड सिक्योर किया था E4 ने, उसके बाद E4 की जो सेट्स थी, E4 की जो रोटेशंस थी, E4 की जो डैमेज थी, टॉप नॉच था। इसके कारण उनको वो MVP भी मिला है। 7-1-7 का ये KDA एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला। अगर आप डाटा पे देखोगे तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा उनका टीम फाइट पार्टिसिपेशन रहा होगा इस पूरे मैच में। मोर देन 80% मैं बोलूंगा। He just ignored his lane, just come back to the mid and top bot और उन्होंने कोशिश किया जितना ज्यादा मैं जो है फॉलो अप दे सकूं अपनी टीम को। एंड उसके साथ फिनिश ऑफ भी आया। अगर आप देखोगे तो CTN हो या फिर हाली हो, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कदम से कदम मिला के चले एलिस के साथ। दैट्स व्हाई दे वॉन दिस गेम अगेंस्ट वायलेंट गोल्स। वायलेंट गोल्स की जीत की सफर को यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट, वो भी ईगोइस्टी की स्पोर्ट्स की तरफ से। यही होता है कि हमारे अल्गैम्बो स्पोर्ट्स के स्क्रिम्स पे आपको देखने को मिलता है, एक दिन एक टीम पूरा मतलब राज कर रही होगी, दूसरे दिन उसी टीम को हराने के लिए कोई दूसरा टीम आ गया होगा। इसी के साथ लेते छोटा सा ब्रेक, आते हैं वापस टू द लास्ट गेम ऑफ द नाइट। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैंने पहले से बताया आपको वेडनेसडे फ्राइडे ये दोनों दिन और होने वाले स्क्रिम ऑफ मोबा 5v5। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपनी टीम को, तो जल्दी से जल्दी जाइए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मिलेगा आपको हमारा वेबसाइट लिंक। उस वेबसाइट लिंक पर जाना है और सीधा जो है आपको लिंक पे जाकर मतलब अपनी टीम को रजिस्टर कर देना है और फिर आप अवेलेबल हो जाओगे फॉर द नेक्स्ट डे स्क्रिम। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू मोबा वॉर्मअप क्लास सीरीज। और आज के मैचेस आखिरी मैचेस की तरफ जाते हुए हम देखेंगे, और ये मैचेस जो है काफी रोमांचक भरे रहने वाले हैं। लेट्स सी कि किस तरीके के जो टीम्स है वो हमें आती हुई दिखेगी। अभी तो आपस में लड़ती हुई दिखने वाली हूँ। मैं हूँ आपका कास्टर, मेरे साथ कास्टिंग कर रही हैं पीछे, जानेंगे उनसे भी क्या हाल चाल है उनके। लेकिन इससे पहले टीम्स के नाम जान लेते हैं। एक तरफ रहने वाली है टीम मैवरिक्स और दूसरी तरफ रहेगी टीम आर्लिंग एमएल। ओके, चलिए आज की मैच की शुरुआत पे देखते हैं क्या होने वाला है। हम टाइम बाय टाइम देख रहे हैं टीम आर्लिंग एमएल कंफर्ट जोन पे काफी ज्यादा खेलते हैं एंड काफी बार जीत भी चुके हैं, तो वापस से आज वही कंफर्ट लेवल देखने वाला है या नहीं। तो बैनिंग के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत हमें फ्रेडरिन दिख रहा है। फ्रेडरिन के साथ मार्शल, एटलस, आई थिंक बेलरिक, फ्रेया जैसे हीरोज डेफिनेटली बैन होने वाली है। बट टीम आर्लिंग एमएल थोड़ा हमेशा के हमेशा जैसे देख के आते हैं, अतरंगी पिक लेके आते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है उन्हें देखने के कि कभी कभी मिया उठा चले आ जाते हैं। चलो मान लेते हैं अभी मिया मेटा में आ चुकी है, काफी अच्छा चल रहा है जिसका जो बर्सकर फ्यूरी में जो बफ आया है। बट वही दिक्कत आती है ना कि लेट गेम हीरो है, थोड़ा लेट गेम तक पहुंचाना पड़ता है। एंड हमने देखा भी है कि आर्लिंग एमएल वो जिलोंग जैसे हीरोज भी लेके आती है, तो क्या आज वैसे वाली गेम प्ले देखने मिलेगी या नहीं, चलिए देखते हैं। बट इसी के साथ आर्लिंग एमएल बैन करते हुए मिनटर बैन करते हैं। जी बिल्कुल। और उसी के साथ मिनोटॉर यहाँ पे बैन किया गया। देखा जाए तो वो हीलिंग वगैरह देती है थोड़ा खासकर, लेकिन अभी देखा जाए तो मिनोटॉर इजीली काउंटर हो जाते हैं। आप कुछ भी लाइक कैरी वगैरह उठा लेंगे तो उनसे इजीली मेल डाउन हो जाते हैं वहाँ पे। दूसरी साइड की अगर बात करें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो बैन है इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अभी क्लीन को बैन कर दिया गया है, तो रेंज यहाँ पे आने का वो चांस नहीं बनेगा। उसी के साथ ही मैवरिक उनकी तरफ से देखना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग बैन मैं कहूंगा। यहाँ पे कुफरा को बैन किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े डैशेस वाले हीरोज कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। तो मेरी शायद हैरिट, चाओ और आपके लैंसलॉट ऐसे जो हीरोज है उनके ऊपर बोल सकते हैं कि टीम मैवरिक एक पकड़ बनाना चाहती है। डेफिनेटली दिखता है आर्लिंग एमएल यहाँ पर अखाई को फ्लेक्स पे नहीं डालते हुए। बेलरिक बैन तो हुआ नहीं, तो बेलरिक उठा ही लिया उनके साइड से, तो वो काफी अच्छा लगा। बट अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा टीम मैवरिक्स क्या लेने वाली है। इसी के साथ गॉड है, गॉड के साथ आई फील लाइक टीम मैवरिक्स जाने वाली है असैसिन के रूट पे, क्योंकि हमने देखा है कि कुफरा भी बैन हो चुका है। बिल्कुल। और उसी के साथ I've been waiting for too long. यहाँ पे कैसा जो बैंस है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। कैरी जरूर यहाँ पे पिक कर लिया है, और कैरी के साथ साथ अब देखा जाए ना तो तीसरा पिक क्या मिया। ओके, काफी इंटरेस्टिंग पिक यहाँ पे किया गया है, मिया उठाया गया है। अब बात करें मिया की पीछे, तो अभी रिसेंटली मिया का पिक रेट काफी ज्यादा बढ़ा है। अब यहाँ पे क्योंकि मिया के साथ आपको ना लाइक बोल सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के बिल्ड यहाँ पे रहते हैं। ट्रिनिटी बिल्ड भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है मिया के ऊपर, उसके साथ साथ क्रिटिकल बिल्ड भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो कहीं ना कहीं वो जरूर एडवांटेज रहता है। अब आपके पास दो यहाँ पे फ्रंट लेनर रहेंगे जो इजिली कैरी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे। लगातार सीसी उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा। हैवी स्पिन वहां पे रहने वाला है। उसके साथ साथ आपका बेलरिक का जो डैमेज है वो भी वहां पे आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ मिया जो है वो बैकलेन को इजिली टारगेट कर सकती है अगर एम्बुश करते हुए आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन गॉड थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर गॉड को एक अच्छी खासी पोजीशन मिल जाती है तो जरूर वहां कहीं ना कहीं आपको मेल डाउन करने पे उसका एक बहुत बड़ा हाथ बोल सकते हैं कि आता हुआ दिख सकता है। उसी के साथ बात करें तो अब बैन सेक्शन की और थोड़ी सी नजर लगाना चाहेंगे। और उसी के साथ जो मेज यानी कि जेतियन यहाँ पे बैन किया गया है, लियोमोट यहाँ पे बैन आएगा, और उसके साथ आखिरी बैन चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है। क्लू को यहाँ पे बैन किया जाएगा टीम मैवरिक की तरफ से, आखिरी बैन। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है पीछे। लेट्स सी, यहाँ पे ड्रैगन को बैन कर दिया गया है। काफी अच्छा बैन। ड्रैगन जो है एक दिक्कत बन सकते थे, कैरी को बैकलेन पे मार्क कर सकते थे जब उनका अल्टीमेट यूज हो जाता, तो वहां पे कहीं ना कहीं बोल सकते कि अर्ली गेम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे वो थोड़ा सा उनको जो है प्रेशर देने की कोशिश की गई है। अभी एक पे देखना पड़ेगा कि टीम यहाँ पे आर्लिंग एमएल की तरफ से क्या आता हुआ हमें दिखता है। डेफिनेटली टीम आर्लिंग एमएल इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अपने कंफर्ट हीरोज पे अभी भी खेल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा लाइनअप बना के आया है, बट वही है कि थोड़ा सा आई फील लाइक
एक्स्ट्रा बर्स्ट हीरो अगर मिड लेन पे होता टीम आर्लिंग एमएल से तो मे बी यहाँ पर कैरी या इवन गॉड को थोड़ा बहुत दिक्कत देता, बट कोई बात नहीं। कंफर्ट हीरो से भी हमने देखा है टीम आर्लिंग एमएल जीत लेके आते हुए, एंड इसी के साथ टीम मैवरिक्स फकीर जैसे हीरो ओपन रखते हुए एंड उनके हाथ पे उठाते हुए लिंक को भी ले चलते हैं। काफी अच्छा हीरो है, बट थोड़ा सा वही है कि टीम मैवरिक्स अभी मिड टू द लेट गेम के लिए, वाइल टीम आर्लिंग एमएल उनका थोड़ा सा जो फ्रंट लेन है इतना टैंकी होने के कारण, सच एज दी बेलरिक एंड इवन दी अकाई, उधर थोड़ा एक्स्ट्रा चांसेस है। एंड यू नो शिंद्रा, रूबी को बफ दिया गया था थोड़े पैचेस अगो, लाइक तभी ये नया आए थे, नए सीजन में आए थे, एंड हमने उनका पिक रेट कभी देखा नहीं बढ़ते हुए, बट यहाँ पर टीम आर्लिंग एमएल उठाते हुए। चलिए देखते हैं क्या होगा, एंड इसी के साथ चलते हैं लैंड ऑफ डॉन की तरफ। जी बिल्कुल, और देवियों सज्जनों स्वागत है आपका यहाँ पे लैंड ऑफ डॉन की तरफ। बात करें ना रूबी की, देखिए रूबी अब पूरी तरीके से चेंज हो गई, उनके जो मैकेनिक्स है पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए। पहले रूबी जो है टैंक बिल्ड पे चलती थी, सस्टेन करते हुए आप इजीली जो टीम फाइट है बहुत ज्यादा सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन अब वो सस्टेन जो है वो ट्रेड ऑफ कर दिया आपका डैमेज के साथ। तो आप ज्यादा टीम में अब बोल सकते हैं कि टीम फाइट पे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। यस, आई एम ऑफेंडेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे एक की पॉइंट अपनी टीम के लिए बनाते हुए दिख सकते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे रोटेशन आता हुआ दिखेगा। लिंक जरूर जाएंगे वो गोलम चुराने का प्रयास करते हुए, या फिर लीथो लेने का यहाँ पे जो है वो प्रयास करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, और उसी के साथ गए सीधा लीथो के ऊपर, मेज के ऊपर आर होता हुआ दिखेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। थोड़ा सा पोक आएगा उधर की तरफ। टॉप लेन की बात करें तो वहां पे भी अभी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं संभल के खेलने का। उनकी जो स्किल्स है वो पोक करने के लिए थोड़ा सा पीछे रह के खेल रहे हैं अभी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीम जो है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो रोटेशन है उनकी तरफ से वो भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत पीछे होके खेल रही है, सेफ खेल रही है। जो फाइट्स है वो असली जो है हमें टर्टल की तरफ आती हुई दिखेगी पीछे, तो आई थिंक वहां पे जो है वो असली फाइट होने वाली है। डेफिनेटली, चलिए देखते हैं। एक बात नोटिस की है कि किंग ऑफ फॉलर से थोड़ा अलग रोटेशन उन्होंने निकाल के लेके आए, एज इन उन्हें अपने जो छोटे छोटे क्रीप जो है वो उन्होंने नहीं लिया, एंड यहाँ पर लिंक जो होंगे थोड़ा सा आई गेस यहाँ पर आगे होने वाले हैं, बट सिम यहाँ पर थोड़ा बहुत सस्टेन करते हुए उन्हें अपना मिनियंस मिस नहीं करना है, बट एक दो हिट अवे। चलो मिनियंस तो मिल गया, बट इसी बात पे सिम को भी यहाँ पर रिकॉल लेना चाहिए। बॉटम लेन पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रही है मिया के लिए। मिया कितना देर तक बच के खेल पाएगी, क्योंकि मिस्टर कंसिस्टेंट आ चुके हैं टेम्पेस्ट ऑफ ब्लेज बॉटम लेन पे, एंड इसके साथ फ्लाई को फर्स्ट ब्लड अभी यहाँ पर बॉटम लेन पे मिल चुका है, एंड तो मतलब सीधा टर्टल। जी बिल्कुल, और उसी के साथ पॉज की एक डिमांड की गई थी, और यहाँ पे टेक्निकल पॉज आता हुआ दिखेगा। आई थिंक थोड़ा सा जो नेटवर्क इशू है यहाँ पे वो होता हुआ दिखा है, उसको फिक्स करने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। और उसी के साथ अब बात की जाए ना, गेम जिस तरीके से आगे चल रहा है, एमएम के ऊपर ऑलरेडी अर्ली गेम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है, जिसके कारण एमएम को फार्म करने का मौका उतना नहीं मिला। उनके बहुत सारे जो मिनियंस है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़े से मिस होते हुए हमें दिखेंगे। लेकिन की बात करें वो भी अच्छा खासा यहाँ पे खेल रही है, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर एक फाइट है वो कहीं ना कहीं टीम फाइट अभी वो ज्यादा मिसिंग थी। जब रूबी टीम फाइट में आएगी या फिर वो एम्बुश करके बैठी रहेंगी वहां पे, तो उधर के साइड से जो है स्थिति किस तरीके से आती हुई बनती हुई वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे जिस तरीके की फाइट होगी पीछे बेसिकली तो एक लेयर सीसी बनता हुआ हमें दिखेगा। एबी स्पिन आएगा अकाई की तरफ से, उसके बाद जो अपने बेलरिक है उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा। वो रूट से जब अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे तो टॉन्ट वहां पे रहेगा। तो एक बार की ये बात है, अगर किसी एक बंदे को पकड़ा हो तो वो बच के निकल पाना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो वो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ध्यान रखना पड़ेगा गॉड की पोजीशन का। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि गॉड कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उनका जो मिस्टिक गज है ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा की साबित हो सकता है अपनी टीम को जिताने के लिए। तो या तो आपको उनको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा बैकलेन की तरफ आते हुए। और अभी बात करें कैरी, वो काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करती हुई चल रही हैं अपने फार्म को, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिड से लेट गेम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अकाई और बेलरिक भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे कैरी का डैमेज। यहाँ पर अभी मिया को फर्स्ट वहां पर डेथ हो चुका था, फर्स्ट ब्लड बन चुके थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली है। देखना पड़ेगा कैसे ट्राई करेंगे फार्म अप करने के लिए, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं लिंग हो या इवन हाई लॉस हो बॉटम लेन आके अच्छे तरह से
एक सपोर्ट दे रहे हैं कैरी को, तो इसी बात पे मिया को डेफिनेटली बहुत सेफ खेलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पॉज अभी यहाँ पर रिज्यूम होने वाला है एंड क्या अकेले टोटल ले सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल। और चलिए यहाँ पे देखने वाली बात होगी टटल की तरफ जो टीम्स है वो आती हुई दिखी है। बेल्डिंग अकाई मौजूदा रहेंगे, रूबी के पास एचपी नहीं है तो उनको पीछे जाना पड़ेगा और यहीं पे दिक्कत आती है रूबी के साथ। अगर रूबी की जगह कोई दूसरा हीरो होता ना तो वो इजीली सस्टेन करते हुए दिखते हैं। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया जाएगा मेज के ऊपर और 10 एचपी पे भेजा जाएगा उनको पीछे। दूसरी साइड की बात करें, अभी तक टटल स्टार्ट हुआ नहीं है और वहां पे देखिए डैमेज आता हुआ दिखेगा। फूक थोड़ा सा करते हुए दिख रहे हैं गॉड। चलिए लिंग का आगमन हो चुका है और अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। डैमेज जरूर दिया जाएगा, हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया है बचने के लिए। टेम्पर्स ऑफ ब्लेड आएगा जरूर, उसी के साथ ही यहाँ पे ब्लीड उठाते हुए दिखेंगे लिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब उनको वो फार्म आराम से मिल गया है, जाएंगे सीधा जो है टर्टल की तरफ वो लेने का प्रयास किया। रूबी की तरफ से आई एम ऑफेंडेड वो बफ को बाहर निकाल देगी जिसके कारण वो बफ मिलेगा नहीं इस समय उनको और वापसी की तरफ आते हुए देखेंगे अपनी लेन की तरफ। अभी तो लिंक की बात करें, उनको जो फार्म चाहिए था अर्ली गेम पे, जो स्नोबॉल चाहिए होता है लिंक प्लेयर्स को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मेज की तरफ से एंटेनर गार्ड आएगा, पीछे हटे हैं, अभी डैमेज देने का प्रयास किया जाएगा। गॉड वहां पे मौजूद है, मिस्टिकस का इस्तेमाल फ्लिकर अंदर की तरफ मारते हुए दिखेंगे लेकिन किसी प्रकार एक एचपी बचते हुए वापसी की तरफ आएंगे यहाँ पे और अपना जो टैरेट है वो बचाने का प्रयास करेंगे। टॉप लेन की बात करें तो पकीतो वहां पे डैमेज देते हुए दिखेंगे इस समय। अच्छा खासा डैमेज, अच्छा खासा उनकी तरफ से बोल सकते रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा। अब देखिए रूबी के साथ यही दिक्कत है कि उतना ज्यादा हील अब आपको नहीं मिलता है, तो इवन दो आप हिट भी करोगे ना तो आप लाइक पुराना जैसे जो प्ले स्टाइल था रूबी का ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। आपको या तो अग्रेसिव खेलना पड़ेगा बहुत ज्यादा या आपको फुल डैमेज पे जाना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ ना कुछ कर पाएंगे। उसके बिना आपका डैमेज अगर आप पुराने टैंक बिल्ड पे जाना चाहते हैं ना तो वो काम नहीं देगा और पकीतो जैसे ईएक्सपी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बॉटम लाइन पे यहाँ पर टॉन्ट पड़ी, जी रेजी को फ्लिक कर मारते हुए बाहर तो निकल पड़े बट नहीं, मिस्टर कंसिस्टेंट ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट के साथ बैक लेन पे रिक्साना की मौत। बट ये फ्रंट लेन में भी कुछ कम नहीं, यहाँ पर मिया ने एटलीस्ट एक जन को निकाला बट इसमें टीम मैवरिक्स की पूरी तरह से जीत हुई टीम फाइट में, क्योंकि एक के बाद एक इवन द बेलेरिक्स जैसा टैंक था उधर फिर भी उन्होंने मेल्ट डाउन किया। वो काफी अच्छे तरह से खेला बट एक मिनट टीम मैवरिक्स यहाँ पर मिस्टर कंसिस्टेंट को काफी ज्यादा किल्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनकी तरफ से सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है कमेंट सेक्शन में। उनके जो प्रिय हैं वो यहाँ पे आते हुए उनके लिए सपोर्ट जता रहे। टीम मैवरिक्स उनके जो फैंस हैं वो जमा है इस समय कमेंट सेक्शन पे अपनी टीम के लिए सपोर्ट दिखाते हुए जा रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट आप एल्गाम्बो स्पोर्ट्स को भी दिखाते रहिए। लेकिन अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे लिंक अंदर का एक और किल लेने के लिए बेड ऑफ टेम्पर्स ब्लेड कलेक्ट करेंगे, बचते हुए निकले एक और किल उनकी झोली में भर दीजिए। इस समय इस गेम को कंट्रोल करते हुए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले आता हुआ मिस्टर कंसिस्टेंट उनकी तरफ से एक कमाल का गेम प्ले आता हुआ दिखेगा। लेकिन कैरी के ऊपर दिक्कत हो सकती है, अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे बचने का प्रयास मिस्टिकस करेंगे, बेसिक अटैक आएगा गॉड की तरफ से, किलिंग स्प्री लेते हुए जाएंगे और मिया थोड़ा सा लालची हो गई वहां पे किल के लिए और वो ग्रीड आपको ले डूबा। अरे रे, यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे वो ट्राई करेंगे टीम मैवरिक्स। अभी यहाँ पर कंटेस्ट तो नहीं बन रहा एंड टीम मैवरिक्स लेन्स भी ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर मिड लेन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो मतलब मिड लेन ओपन होने की वजह से तभी अकाई थोड़ा बहुत उन्हें अभी दिक्कत है कि आइटमाइजेशन के बारे में बात करें तो यप इवन दो गॉड मिड लेन पे है, उनका फर्स्ट आइटम बन चुका है एंड ऑलमोस्ट सेकंड आइटम भी अभी यहाँ पर होगा। ओके अ बिट ऑफ अ स्टन अखाई यहाँ पर जा रहे हैं, एक फ्लिक करके साथ टॉन्ट यहाँ पर पिन डाउन हो चुके हैं बट टेम्पेस्ट ऑफ ब्लेड बचाते हुए यहाँ पर बच तो गए हैं क्योंकि जी रेजी का जो डैमेज है दैट इज अनस्टॉपेबल। एक मिनट मिया यहाँ पर अपने अल्टीमेट के साथ मूनलाइट बट नो, जैसे आप बोल रहे थे शिंद्रा, ये देखिए मिस्टिक गश का क्या ही डैमेज, उन्हें बराबर से अच्छा तरह से डैमेज मिला बट मिस्टर कंसिस्टेंट एक के बाद एक डबल किल वहां पर एंड ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है यहाँ पर टीम आर्लिंग एमएल का। जी बिल्कुल, अब वो फार्म गैप उनको मिल चुका है। लेवल गैप की बात करें तो वो देखिए आप लेवल 11 के यहाँ पे हो चुके हैं लिंक, और दूसरी साइड की अगर बात की जाए ना तो वो वहां पे मैक्स टू मैक्स लेवल उनका लेवल 8 है, तो 3 लेवल का डिफरेंस ऑलरेडी मिल चुका है। और यहाँ पे फार्म गैप की बात करें वो आप देखिए कितना ज्यादा बन चुका है, ऑलमोस्ट 7K का फार्म गैप आ चुका है इस समय और गेम जो है अभी तक 7 मिनट की दूरी पे नहीं गया है।
डेफिनेटली चलिए देखते हैं। टीम मैवरिक्स यहाँ पर वापस बैक लेन पे, माय गुडनेस फ्लाई यहाँ पर चलो मार तो गए बट यहाँ पर वापस से पिन डाउन होने वाले अकाई के अल्ट की वजह से, बट यहाँ पर इतना डैमेज है उनके पास कि वो टैंक्स को मिस करते हुए एंड मिस्टर भैया आज छा चुके हैं इस मैच में। कमाल का गेम प्ले लिंग की तरफ से आता हुआ, ब्लेड ऑफ टेम्पर स्मूथली वहां पे सारे ब्लेड कलेक्ट किए, फिर उसके बाद वापस टीम फाइट पे आए, वो 2 किल और यहाँ पे कलेक्ट किए। अब लेवल 12 यहाँ पे हो चुके हैं। रोटेशन की बात करें काफी उम्दा रोटेशन उनकी तरफ से आता हुआ, फार्म की बात करें काफी अच्छा खासा, या डिसीजन की भी बात करें ना वो भी काफी बेहतरीन। डेफिनेटली यहाँ पर अभी आखिरी टोटल आ चुका है। यहाँ पर टीम आर्लिंग एमएल को कोई कंटेस्ट नहीं मिलने वाला है। कि बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं पकीतो, लेकिन फंसेंगे यहाँ पे, डैमेज आता हुआ दिखेगा, फाइनली शट डाउन दिया जाएगा। मिया यहाँ पे चीनी टेबल के साथ जाती हुई दिख रही है, गोल्डन स्टाफ उन्होंने यहाँ पे उठा लिया है और अब थोड़ा सा ना बोल सकते हैं कि एक कोशिश जरूर रहेगी, एक शटडाउन जरूर मिला है, लेकिन अभी भी गोल्ड गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए जी रेजी वो आते हुए दिखेंगे, नीचे जो टरेट है वो लेते हुए गए हैं। कमाल का खेलते हैं ये भी। टीम मैवरिक्स की बात करें तो वो स्पोर्ट्स में लगातार स्क्रीम्स में आती हुई दिखती है हमको, और लाइक गेम प्ले भी काफी अच्छा खासा आता हुआ दिखेगा। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया अंदर की तरफ, वो सस्टेन करते हुए जाएंगे, लेकिन कितनी देर तक हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया है, फाइनली पिन डाउन जरूर करेंगे, लेकिन उनको बस से निकलना पड़ेगा। ग्लू इस पाथे का इस्तेमाल किया है, लेजेंडरी लेके जाएंगे मिस्टर एक और किल उनके बाद, लेकिन गॉड भैया आ गए पीछे से, चुराते हुए जाएंगे वो मॉन्स्टर किल, और उसी के साथ मिड का टरेट है वो भी टूटेगा। और टीम आर्लिंग एमएल तो थोड़ा सा आज बोल सकते हैं कि हम उनका कम्बैट पे कितना अच्छा खासा चल नहीं रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं वो गैप जो है ना वो बहुत बड़ा हो चुका है इस समय पीछे। लाइक आई थिंक अगर EXP पे भी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि दूसरा हीरो होता जो बोल सकते हैं पकीतो के अगेंस्ट अगर चल जाता, तो आपके पास एक बोल सकते हैं कि कमबैक रहता। आप EXP भी यहाँ पे हार चुके हैं, उसके साथ साथ गोल्ड लेन भी हासिल करते हैं, जंगल पे गैप इतना ज्यादा गया, देखिए फिर अंदर की तरफ जाएंगे, इस बार पेस के अंदर गए हैं, ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट, और यहाँ पे ब्लेड कलेक्ट करते हुए निकलेंगे। आई एम अ फ्रेंड ने जरूर लगाया, लेकिन ऑलरेडी रेंज के बाहर, और ये देखिए वापसी आते हुए दिखेंगे, और बस ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। डैमेज की बात करें तो सिर्फ एक मिया ही है जो अच्छा खासा डैमेज दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनको फार्म की जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर फार्म कैसे ट्राई करेंगे, क्योंकि टीम आर्लिंग एमएल अभी भी यहाँ पर मिया को फार्म पूरी तरह से अच्छे से देंगे तो डेफिनेटली चांस बनी रहती है। बट इसी बात पे टीम मैवरिक्स जल्द से जल्द अपने ये लॉर्ड भी ले रही है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक गस, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डैमेज यहाँ पर देते हुए, एंड एक तो ये इतने टाइम पे लाइक 10 मिनट हो चुके हैं गेम पे, एंड ये टाइम है जहाँ पर गॉड का भी आइटम्स आ चुके हैं, उसके कूल डाउन भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो डेफिनेटली ही कैन मैनेज टू डू दैट। बट यहाँ पर खत्म नहीं हो चुका है, टीम मैवरिक्स रुके हुए लॉर्ड के लिए, लेन्स नहीं क्लियर कर ले एंड सिंक्रोनाइज कर दे के लिए। पकीटो एट द टॉप, कैरी एट द बॉटम। शिंद्रा ये देखिए अंदर की तरफ गए हैं, जरूर कोशिश रहेगी, और यहाँ स्पिन आता हुआ जरूर दिखेगा। ब्लेड ऑफ टेम्पेस्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन करेंगे, जाते जाते गिल लेके जाएंगे, फाइनली शट डाउन मिलेगा, और उसी के साथ में यहाँ बहुत ही कम एचपी में बचती हुई के लिए अभी भी लॉर्ड आ चुका है। ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल किया, स्लो डाउन किया जाएगा, पकीतो अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जैब आएगा उनकी तरफ से अपरकट, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा मैच को भी। अब बात की जाए यहाँ पे होली वो जा चुके हैं पीछे, और जो टीम्स है वो वापसी की तरफ आती हुई दिखेगी। स्कोर की बात करिए तो 24-3 का स्कोर है इस समय। फार्म डिफरेंस की आप बात करेंगे तो फार्म डिफरेंस ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 10K का होने जा रहा है। Oh my goodness, इतना बड़ा फार्म डिफरेंस, एंड डेफिनेटली ये वन साइडेड गेम हो ही गया टीम मैवरिक्स के हाथ पे। यहाँ पर इवन दो अकाई जैसे हीरो इतने अच्छी तरह से मिस्टिक गश के वजह से प्लस जी का डैमेज फ्रॉम द स्पिनिंग लाइट व्हील इतना ज्यादा है कि अकाई जैसे हीरो, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो 9000 10,000 के एचपी में बैठे हुए फिर मेल डाउन हो चुके हैं। अभी टीम आर्लिंग एमएल ने डेफिनेटली एक अच्छा सा डिफेंस रखा है, क्योंकि उनके हाथ पे अभी भी इनहिबिटर्स है, बट वही दिक्कत आती है व्हेन दूसरा लॉर्ड आ जाता है, पूरी तरह से इनहिबिटर्स गायब हो जाएंगे लॉर्ड की वजह से, मिनियंस की वजह से, क्योंकि टीम मैवरिक्स वहां पर काफी अच्छा तरह से खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरी की पूरी तरह से
एक के बाद एक क्रीप सब उठाते हुए टीम मैवरिक्स अपने हाथ, वो गोल गैप को अभी भी बढ़ा रही है। ऑफ कोर्स, और लगातार उनकी तरफ से, टीम मैवरिक की तरफ से एक भी गलती नहीं हो रही है यहाँ पे। लगातार कमेंट सेक्शन पे जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिख रहा है, और आई थिंक वो जो एक बोल सकते हैं ना कि काफी करीबी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिख रहा है, और इसलिए यहाँ पे जो है जलवे दिखा रहे हैं अपने अपने लिंक भाई जो है, और पूरे फॉर्म में आज खेल रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है ना, वो एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे देता हुआ जा रहा है इस समय टीम मैवरिक को। डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर टीम आर्लिंग एमएल को कोई फार्म करने के चांस नहीं मिल रहे, तो थोड़ा बहुत अभी ढूंढ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, चांसेस अभी भी है, क्योंकि लेट गेम मिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल। अगर उन्हें अच्छा सा एक पोजीशन मिला, वो भी लिंक से थोड़ा दूर, गॉड से थोड़ा दूर, तो चांस तो है, बट क्या हमें ओके मिस्टेक गश यहाँ पर सिम के ऊपर आधे से आधा एचपी का, अब एक के बाद एक डैमेज यहाँ पर, एंड हिमालयन एमएल वापस से उन्हें चांस नहीं मिल रहा है रिवर एरिया जाने को। बट क्या हम एक बार आइटम्स देख सकते हैं कि हम मिया के बारे में बात करें तो 2 किल्स है, बट विंड ऑफ नेचर है क्या? नहीं, ये तो थोड़ा गलत रास्ते में है मिया आइटम्स के साथ। आई थिंक वो थोड़ा सा यहाँ पे टिनेटी बिल के साथ जाना चाहते हैं। देखिए अब क्रिटिकल के साथ दिक्कत ये होती है ना कि सामने आपके हाइलोस बेसिकली स्लो डाउन कर देते हैं आपके अटैक स्पीड को, और इसके साथ साथ ना आप क्रिटिकल पे अगर वो ब्लेड आर्मर वगैरह बना ले तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं वो टिनेटी के साथ जाना चाहते हैं, उसे एक सेफ पिक रहता है, आई थिंक वर्क कर जाता है। बट इस समय उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है ना कि वो कुछ कर नहीं सकते अभी। इन दी एंड वो कोशिश जरूर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पगी तो आएंगे देखिए तरफ, और उसके साथ एयरबॉर्न दिया जाएगा सिम, उनका यहाँ पे एक आत्मा होता हुआ भेजा जाएगा उनको सीधा यहाँ पे रिकॉल स्पॉन की तरफ, और यहाँ पे मिडिल लेन से जो है लॉर्ड वो मार्च करता हुआ दिखेगा। लेन बुरी तरीके से सिंक हो चुकी है इस समय, और सारे के सारे टावर के ऊपर, इमीडिएट टर्रेट के ऊपर वो दिक्कत आता हुआ दिखेगा। मिस्टिकस का इस्तेमाल किया गया, अभी स्पिन लगाते हुए पीछे बैक डोर यहाँ पे करते हुए दिखेगा, लेकिन वो डैमेज आता हुआ दिखेगा। पकी तो यहाँ पे किलिंग स्प्री, डबल किल उनकी तरफ से, और यहाँ पे जा चुके हैं बेस के लिए। टरेट अंदर की तरफ रोकने का प्रयास किया जाएगा, पोक आएगा जरूर, इंटरनल गार्ड का इस्तेमाल किया लेकिन ज्यादा फायदा होगा नहीं, और उसी के साथ फिनिश ऑफ डबल किल, पूरी की पूरी टीम खत्म कर दी है यहाँ पे आर्लिंग एमएल की, और उसी के साथ टीम मैवरिक इस गेम को डोमिनेट करते हुए जीतेंगे ये आखिरी मैच अपने नाम करते हुए। क्या ही बेहतरीन गेम आया है इनकी तरफ से, कमाल का गेम प्ले, वन साइडेड डोमिनेशन, और आज तो भैया वो खतरनाक गेम प्ले आता हुआ। माय गुडनेस, 2 लॉर्ड, 30 किल्स, एंड पूरी की पूरी तरह से एमवीपी कॉर्ड के हाथ पे, सीधा गेम निकाल दिया अपने हाथ में। काफी अच्छे तरह से खेले यहाँ पर, एंड एक के बाद एक, इवन दो फ्लाई के पास स्काई फियर्स नहीं था, फिर भी उन्हें एमवीपी मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टरेट पुश करने की वजह से, प्लस वो असिस्ट इतना ज्यादा है कि उन्हें मिल चुका है। बट टीम आर्लिंग एमएल के बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो यहाँ पर ड्राफ्ट में आई फील लाइक थोड़ा बहुत कमी आ चुकी है, एंड द वे दैट दे आर प्लेइंग, यहाँ पर अगर थोड़ा सा अर्ली गेम भी होता है इन द मिडिल लेन सच एज लिलिया और इवन अ वलीर, तो मे भी थोड़ा चांसेस होता, थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता, क्योंकि वेक्साना इज अ काइंड ऑफ अ हीरो दैट इज आई फील लाइक वेरी डिपेंडेंट ऑन टू द जंगलर एंड टैंक। अगर यहाँ पर टैंक नहीं विजन देते, टैंक मिड लेन पे जल्द से जल्द क्लियर नहीं करते मैच के साथ, तो वैसे टाइप में हीरो इज डेफिनेटली नॉट सूटेड इनटू द मिड लेन, एंड इसी कारण की वजह से हम वो मेटा पे नहीं देखते हैं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम पे हमें आर्लिंग एमएल के हाथ से कुछ अलग सा दिखे ड्राफ्ट में, बट कोई बात नहीं, वो आज हुए हमारे लास्ट मैच ऑफ द डे। बट हमारे जो जोरो भैया है, कॉस्प्ले कैसे चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आज भटकते भटकते जो है अलगामो की स्ट्रीम पे आ चुके हैं हमारे जोरो भाई। और कल जो है क्या पता कुछ और यहाँ पे आते हुए दिखे, और ऐसे ही फन कास्टिंग के लिए दोस्तों ज्वाइन करिए अलगामो ई स्पोर्ट्स, और अपनी टीम को रजिस्टर करो स्क्रीम्स वगैरह के लिए, और यहाँ पे आके आप स्क्रीम्स वगैरह खेल सकते हैं। ऐसी ही कास्टिंग वगैरह देखने के लिए ना भूले मोबा वार्मअप क्लास सीरीज, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट जो भी मैच होने वाला है तब तक के लिए मिलेंगे आप सभी से, लेना चाहेंगे विदा अभी के लिए। तो देवियों सज्जनों, मिलते हैं आपको बाद में, तब तक के लिए शोभा खेर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।